and started that recording. So welcome all of you. Today we are starting this heredity chapter, and I will not go on like details of everything. Just I will pitch all the points which is necessary. You will understand it very easily. Okay, what I will try to means I will just focus those questions or those points which are your work actually. Okay, so I'm not going to tell you what is heredity, these things. I'm directly coming on the point. You will understand it easily. Okay, so there was a all of you can see this whiteboard. Yes, right? sir. Yes, sir. So my point is like there was one scientist named Mendel. All of you had this name, Mendel? Yes. Full name is Gregor Mendel. Okay, fine. So what he has done? इसको करना क्या था ना? What will be like next generation में क्या होता है? For suppose he has law of inheritance. we are knowing. For suppose he take a pea plant. Pea plant can be tall. Pea plant can be short. Phenotype, and then next term is genotype. Let us understand. If you take a for suppose you take a pea plant. What I told? Pea plant. Take a matter, you know. So pea plant can be tall, can be short, right? ठीक है ना? So Yes, if I sir. cross this, if I cross these two, इसको अगर मिला देंगे और mix करके देखेंगे कि some pea plant has a tall character and other pea plant has a short character और उसको cross कर देंगे, like father and mother से क्या होता है? Child होता है ना? So same like tall pea plant and short pea plant को अगर match करते हैं तो क्या होगा? Right? I was telling the father का, for suppose father has a blood group of A, mother has a blood group B. बच्ची का क्या होगा? A होगा, B होगा, O होगा, AB होगा. What will happen? या तो B होगा या तो AB. हाँ, बहुत सारे things है ना? So that we have to learn. So first we are taking very simple exam, है ना? Like very simple examination. We are taking pea plant. One is tall and other one is short. Right? Fasting first. Now second point. इनका trait होता है. What I can say? Trait होता है. जैसे all of you know ना that if someone has a O blood group, they will write like OO. If someone has blood group AB, they will write like AB. AB positive, negative, I'm not talking on that. Okay. Someone has a blood group A, someone has a blood group B. This is genes. Their genes type. This is called genotype. What I'm telling? Genotype. Genotype. Okay. So this one is their genotype. Okay. So if I talk about this tall plant, this will be called capital T. बच्चा साउंड नहीं, ठीक है ना? अगर आपके बैकग्राउंड से साउंड है तो आप उसको बंद करिए. Tall will be called capital T, and short will be called Small t. And now we are crossing these two characters. जैसे मम्मी पापा से बच्चा, so इन दोनों का भी बच्चा, this one. ठीक है? So this generation, I know बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है? But बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा. So all of you, है ना, थोड़ा साइलेंस रखिएगा, ठीक है ना? So what will happen? Phenotype. One is there. One is genotype and one is phenotype. Phenotype is something. You know, like there are many actors ना दिखाते एकदम body shorty पूरा है. Like their body shorty are so much. अगले दिन news आ गया. Like heart attack आ गया, something आ गया. You know what I'm trying to say? देखने में बहुत strong और internally tight face. So I'm just giving example. I'm giving you example that those who are tall, they seems to be tall, है ना? ये दिख रहा है कि tall है, right? And their character is also capital T. And which one is short? आपको क्या दिख रहा है ये? Small t. Now Mendel ने क्या किया? दोनों को cross कर दिया. This one is first generation. जैसे for suppose आपके दादा होंगे and दादा से क्या हुए? दादा से क्या होते हैं? आपके parents, मम्मी पापा. After that मम्मी पापा you come. Right ना? Very fair. तो दादा दादी से मम्मी पापा is first generation. मम्मी पापा से आप, this one is second generation. और आपसे भी आगे आने वाले बच्चे होंगे, this one is third generation. उस बच्चे का भी बच्चा होगा fourth generation. Getting my point? और ये generation हंसने की बात नहीं है. This generation is coming from like long, है ना, lakhs of thousands of years, right? So what I'm trying to say, if it is written F1 is first generation. है ना? मेंडल ने टॉल लिया, शॉर्ट लिया, दे हैव क्रॉस्ड एंड व्हाट दे हैव फाउंड ना कि सारे के सारे टॉल हैं. व्हाट दे हैव फाउंड?
What Are he has tall. found? All are tall. tall. All are, Tall. but they seems to be tall. ये दिख रहे हैं कि tall है. They are all tall. So this is their phenotype. इसको क्या कहेंगे? इनका phenotype क्या है? They are all tall. Phenotype is like वो body दिखा रहा है ना, that they are seeing कि हाँ हम body वाले हैं. They seems to be tall. But इनका जब genes देखा गया ना कि इनके genes के अंदर क्या है, so it seems to be capital T small t, capital T small t, इसका भी capital T small t, and this one also capital T small t. मैंने क्या बोला? They have both the characters. They have both the characters. Each one have both the characters. But if you see, they will look like only tall. इनके पास दिख रहा है कि ये short है. No, sir. No. हाँ, they all seems to be tall. This is only phenotype. But if you count genotype, then they have both the characters. Now someone will question. Devanshi will question, sir, दिखता तो tall है, आप कैसे करो कि इसके अंदर short भी है? They can ask ना? Anyone can ask? Yes. Yes, sir. Anyone can ask ना, सर दिखने में तो tall है, कैसे आप small की आप बोलेंगे तो मान लेंगे. मेंडल के पास भी यही क्वेश्चन आया. Now start thinking कि अब क्या करें? राइट, फॉर सपोज अभिषेक आ गया, कहा सर सारा तो दिखने में टॉल ही है, शॉर्ट कहाँ है, क्यों आप स्मॉल टी लिख रहे हैं? डेफिनेटली ना, एक बच्चा भी पूछ सकता है, अभी पूछ सकते हैं, वेरी जेन्युइनली. सो नाउ मेंडल विल डू व्हाट? मेंडल ने क्या किया ना, इसमें से एक पी प्लांट को आप पिक कर लो. फॉर सपोज इन्हीं पी प्लांट्स को उन्होंने पिक किया, इन्हीं पी प्लांट्स को विच जो F1 जनरेशन से मिले. ओके, जो F1 जनरेशन से मिले. सो ही टुक व्हाट? ये जो F1 जनरेशन से आपका आया, क्या आया है? कैपिटल टी, Capital T, small Small t. हाँ, राइट नाउ हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है इसमें स्मॉल टी कैरेक्टर है नहीं है हमको नहीं पता. बट आई एम टेलिंग, हमने इसी पी प्लांट्स को लिया और फिर से क्या किया है? क्रॉस किया, इन्हीं कैरेक्टर्स को मैच कर दिया. राइट, अब देखो, फॉर सपोज दे हैव द कैरेक्टर ऑफ दिस, है ना, कि ये दिखने में टॉल है, देयर जेनोटाइप इज कैपिटल टी स्मॉल टी. इन्हीं को लेकर के क्रॉस किया मेंडल, एंड व्हाट ही फाउंड? What I have drawn? 3 tall, 1 short. 3 tall, 1 short. 1 dwarf. आपको ये याद करना पड़ेगा, यू नो, आपके एग्जाम्स के ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना? 3 tall and 1 short. दिस इज फेनोटाइप. दिस इज फेनोटाइप कि टॉल इज टू शॉर्ट का रेशियो क्या है? 3:1. This is phenotype only. ये दिखने में ऐसा है. But when it comes to genotype, तब आप क्या करोगे? मैं एक एक्स्ट्रा बात बोल करके आपको समझाता हूँ. When it comes to genotype, what will happen? Make a box. आपको रटने की भी जरूरत नहीं है. Make a box. Draw 2 lines. We have 2 characters only ना. एक tall character है और एक short character है, right? So we have 2. Okay, so capital T small t, capital T small t. From these two we are observing capital T. I'm explaining. Just आप देखो हम कर क्या रहे हैं. From here we are obtaining capital T small t. From this capital T and small t, I am founding this one, and this and this I will form small t. अभी सभी को ध्यान दिए हम क्या बोल रहे थे? अभी देखो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा. मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, राइट? अभी जो मैंने ब्लॉक्स किया, राइट ना? सो कम टू द पॉइंट. जब भी 2 कैरेक्टर्स है, ठीक है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड. इसको आपके एनसीईआरटी में या एस चंद्र आप अदर बुक को उठाओगे, इट विल बी रिटन मोनोहाइब्रिड. मोनोहाइब्रिड मतलब आप देखो एक ही कैरेक्टर ले रहे हो. क्या वो टॉल है या शॉर्ट है? दिस इज वन टाइप ऑफ कैरेक्टर. टॉलनेस और शॉर्टनेस, इट इज ओनली वन कैरेक्टर. यू आर चेकिंग लेंथ, कितना लॉन्ग है या शॉर्ट है, यही ना देखा. सो दिस विल बी कॉल्ड मोनोहाइब्रिड. आई विल कम टू डाइहाइब्रिड आल्सो. सो नाउ अभी नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? फेनोटाइप इज 3:1 दिखने में, बट जेनोटाइप, इफ आई टॉक अबाउट जेनोटाइप, it will be
This first one will be 1:2:1. हाँ, क्या है बात करते हैं कैपिटल T ये फर्स्ट वन, देन द नेक्स्ट विल बी कैपिटल T Capital small T, t, small t. then the next will be small t, small t, capital T Small t. small t, and the last one is small t, small small t. t Small t, small small t. t. अब सर क्या कर रहे हैं, सर पागल कर रहे हैं हम लोग को, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सी दिस जेनोटाइप, ये जो टॉल आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टॉल कैरेक्टर है, स्मॉल टी कैरेक्टर नहीं है। सेकेंड वन में दोनों ही कैरेक्टर्स है, राइट दोनों, राइट yes sir. है ना। थर्ड वन में दोनों ही कैरेक्टर्स है, दोनों, बट फोर्थ वन में small t, small t. दोनों small है. ओनली स्मॉल कैरेक्टर है। अब देखो यहीं पर बात आ जाता है कि अगर फॉर सपोज यू हैव टू रियलाइज कि टॉल एंड शॉर्ट है ना, साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि टॉल कैरेक्टर और स्मॉल कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर अपीयर होगा। मींस इफ आई एम क्रॉसिंग टॉल एंड शॉर्ट, फॉर सपोज समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड समवन इज वीक, फाइट होगा तो कौन जीतेगा? Strong. स्ट्रॉन्ग वन विल विन, Strong. राइट। आप ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको बेटर मार्क्स आएगा, ही ना होता है। सो ऐसे ही हर कैरेक्टर्स में ना देखना होता है कि कौन डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट विल अपीयर। वो यू सुनो, आपने सुना है ना, जो दिखता है वो बिकता है, राइट। यू हैव हर्ड दिस थिंग, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अभी आप ऐसे इजी वर्ड्स में समझो, इट इज नॉट लाइक दिखता है बिकता है, इट इज लाइक कि वन इज डोमिनेंट कैरेक्टर, वन इज डिसिसिव कैरेक्टर। अगर आप टॉल और शॉर्ट की बात करोगे, टॉल एंड शॉर्ट की बात करोगे, डोमिनेंट होगा टॉल और रिसेसिव कौन होगा? शॉर्ट। Short. दैट रेट विच विल नॉट कम, ठीक है ना। रिसेसिव मींस व्हाट, आई एम टेलिंग वन इज डोमिनेंट, लाइक द स्पेलिंग डोमिनेंट, अनदर कैरेक्टर इज कॉल्ड Recessive. recessive, है ना। when dominant and recessive will fight ना, only dominant will be appearing to you, recessive will be there but वो दिखेगा नहीं आपको। so that capital T, this one ना, capital T, both characters are tall. when I come to the second one, both in these two, see both capital T small t is there, right Ashwini, दोनों ही कैरेक्टर्स है, but which will appear, आपको पता है डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा, so it is phenotype, ये दोनों टॉल है, राइट ये दोनों टॉल है, राइट मनु, समझ पा रहे हैं? Yes sir. है ना। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस लास्ट वन में दोनों ही कैरेक्टर्स क्या हैं? Short. दोनों ही Short. शॉर्ट कैरेक्टर्स है, कोई डोमिनेंट है ही नहीं। इफ द ओनली द कैरेक्टर इज टॉल, बोथ आर टॉल, अभी दोनों ही कैरेक्टर रिसेसिव ही है, तो क्या अपीयर होगा? व्हाट विल अपीयर? Recessive दोनों recessive है तो both are recessive. If both are recessive, then I will get that short character only. And for finding, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आप कैसे निकालोगे? That I was doing this. I will creating this bracket. I have only two characters. One is tall, the other one is short. So I will write here capital T small t. Here capital T small t. That I was doing. First dabba will be like, first box will be capital T. ठीक है? Capital T. Next one will be capital T small t. So another will be capital T small t. The next will be capital T and small t. So capital T small t. Right. Why they are tall? Why their phenotype are tall only? Sir, because they have dominant character. All have C. At least one is T. और जहां dominant आ गया, that will become its character. But in the last one, small t and small t, right? The character will be small t. ठीक है? So now, if the question is like this one is small t. Now the question is, what is the genotype? Genotype will be in the ratio of 1:2. This character is 2 are appearing like that, and this one is. So in your NCERT, if you see your NCERT, it will be written in bracket 1:2:1, right? But if I talk about phenotype, means character only, it will be 3:1. It is 3:1 only now. 3 is tall and 1 is short. So it will be phenotype is 3:1, genotype is 1:2:1. अभी ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes sir.
कौन नहीं समझ रहे बताइए? Anyone is not understanding? Should I continue? Yes. Yes, sir. Yes. Clear. Okay, fine. Just now we are talking about monohybrid, जहां पर एक ही characters हमने देखा, right? One is tall and other one is short. Okay. Wow. So just a second. War. Yes, sir. Now the next point is all of you know, if I talk about the color, purple color and violet color. For suppose you have two colors, one is purple and another color is violet. You know which one is the dominant character? If two are crossed, which color will be dominant? Purple. 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 If you have Purple. gone through your NCRT, Hana, you will see that this character will be dominant. Okay, this character will be dominant. Okay, and this character will be recessive. Okay, so if in your examination question is asked that there is some purple color leaf and other leaf is like violet color, now tell me what is the color of the first generation? Purple. Purple. फाइन. अब आपको यहाँ आपको अभी फिलहाल क्या करना है? यू मस्ट रिमेंबर इट कि पर्पल कलर इज द dominant character. Fine. Dominant color. हाँ, exactly. The same thing is happening. This one is also monohybrid case. मैं क्या बात कर रहा हूँ? सिर्फ कलर का बात कर रहा हूँ. So this will be categorized in monohybrid case. है ना? Monohybrid case. ठीक है ना? Because I am taking only color. Earlier I was taking only Height. height. So that case is also monohybrid. Now the next will be a case of dihybrid. What I am trying to say? Dihybrid. Okay. So if I talk about dihybrid, so if you all of you seen pea plant ना, सबने pea plant देखा होगा, right? Yes, yes, sir. Pea plant में one pea is like round shape. क्या है? Round shape. If I'm talk about shape, Another will be wrinkled. हाँ, one is round and another will be like, if you see like a pea na, this one is, I'm showing on Google also, wrinkled. At the same time, I will take the shape. One character is shape. Either it will be round, totally round, and another will be wrinkled, and the next will be color. If I talk about color, I think we have to study. One is green color. Yellow and Another is yellow in color. And yellow color. So you first, we will take those pea plants which might be round and green, round and yellow, wrinkled or green, wrinkled and yellow. Means I'm taking two characters now. One with shape, I will see Shape. it will be looking like round or wrinkled, or it will be looking like green or yellow. Okay, I am showing you a diagram. All of you can see now. This one is Yes, sir. totally round, Yes, right? sir. This one is totally round, but green in color, right? This one is Round and yellow in color. Yellow color. actually I want to some natural pea. I want to see actually. Only like it is diagram only.
You can see this one is wrinkled, something like झूरिया, right? Something वो बीच में like somewhat like पचका ऐसा कुछ है, right? So this one is wrinkled Yes. shape. ठीक है ना? This one is wrinkled, this one is round, and one thing is like one is green and one is like yellow. Yellow. So we are taking what? We are taking two characters. One is round or it is wrinkled, Wrinkled. means shape. Wrinkled. One character is Wrinkled. shape and other character is Color. Color. Yellow. color. Color. One is either yellow or green. So now you have to remember which character is dominant. Which character is dominant. So if we consider, so we will found that, see, this I have taken round and yellow, and this one is green and wrinkled. So if I cross these two, what I am getting? Yellow and round. Round yellow. Round yellow, exactly. So what I will try to say that in these two characters, just remember this thing, then I will continue in the later class. Just we have to remember, if I talk about round and wrinkle, round will be the dominant one. Which one is dominant? Round. Round. If I talk about Round. color, which one will be dominant? Yellow. Green. Yellow. Green. Yellow or green? Green. 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 Yellow, Green. green. That's the dominant. Greenish yellow. Greenish yellow. No, No. sir. No, Yellow. no, Yellow. Yellow. Say yellow. All of you see? Yellow. You can see? Yellow. 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 है ना? ठीक है, all of you can Yellow. see? You have to remember, right? अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि अब इसके केस में ना I will draw that again, that box, and I will explain. ठीक है, so it will take time. So all of you write the code of today. Mono hybrid. You can now start. ठीक है ना, आपको समझ में भी आएगा. मैम सेम will repeat. So आपको ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है ना? Mono hybrid versus di hybrid. I think evolution portion is already removed from your like है ना, in CBSE ना. Dihybrid. Yes. All of you write the code of today. Monohybrid versus dihybrid. And after the class, like let me know आपका subject next year क्या है, ठीक है ना? Because I have to call, है ना, बहुत ज़्यादा call करना पड़ रहा है. Like you have to message me. Either you are taking like maths in the next class or biology in the next class in class 11 or commerce or arts. ठीक है ना? आप जो भी ले रहे हैं आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना? Yes, sir. Right? Okay, guys, है ना? Today Mahima ma'am is taking only one class, so join. Sir, I have a doubt. हाँ, tell बच्चा. Nandini, you have to send me that code in the message, WhatsApp message. Other, है ना? All of you, otherwise, ना, join your class. हाँ, tell me your doubt, बच्चा. Sir, how do germ cells make a single set of gene from the normal 2 copies? हाँ, so Tejaswini, you know ना, when the gene will when the genes, see, every chromosome is not a single thread, it has double thread, right? So for Yes, suppose this one is a single set, and this set is not a, in your NCERT, it is telling directly that your chromosomes is not a single thread, it is a double thread. So for suppose one character I am telling from father side, another one is from mother. So if only one is transferred from here and one from here, again up the pair will form, na? So it will be written there in your NCERT that a chromosomes is not a single thread, it is a strand of 2, okay, and one will be sent from each parent. So again it will miss these two again will form that set, 2 set. ठीक है तेजस्विनी? Yes, sir. है ना? Read that NCERT line. अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, फोटो खींच करके हमें कॉल करिए, राइट? हाँ, sir. Bye, है ना? Keep studying, है ना? Keep studying. I will continue that static slash and whatever. Yes, Devabhuti. Bye. Thank you, Bye, sir. guys. Thanks. Thank you, sir. You have any Bye, questions? sir. Bye. Sir, will you explain structure of atom? Structure, Harshit, then like आप separately हमसे connect करिए. Okay, sir.